नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई दिलचस्प कहानियां और उन कहानियों से आप लेते हैं एक नई प्रेरणा रोजाना। तो आइए कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है उदयपुर की रहने वाली डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट है और माहे क्लिनिक की फाउंडर है। जी हाँ, ये एक स्किन स्पेशलिस्ट है जो सोराइसिस, एक्ने और एक्जिमा जैसी और भी कई तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देती है। आपको बता दें, इन्होंने मणिपुर, नेपाल से अपना एमबीबीएस पूरा किया। एमबीबीएस और एमडी करने के साथ ही इससे संबंधित और भी कई कोर्सेज किए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर स्वाति ने इसे पेशेवर रूप से अपनाते हुए इस फील्ड में एंटर किया। करियर के शुरुआती दौर में इन्हें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हमेशा खुद को एनकरेज किया, खुद पर भरोसा जताया और अपने इसी भरोसे के साथ ये आगे बढ़ती गई और आज ये इस पेशे में काफ़ी बेहतरीन कर रही है। दोस्तों, ये मानती है कि इन्हें हमेशा अपने हस्बैंड और फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। उन्हीं के सपोर्ट के कारण ये आगे बढ़ पाई और सफलता का ये मुकाम हासिल कर पाई है। तो ये कुछ खास बातें थी इनकी लाइफ से जुड़ी, इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई किस्सों और अनुभवों के बारे में जानने के लिए आइए अब हम सीधा मिलते हैं इनसे और इनकी सफलता की ये पूरी कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। Hi, I'm Dr. Swati Tripathi. I am a dermatologist, that is dermatologist, and I'm also the founder of Mahe Clinic, that is एक skin specialty clinic, skin hair and nail specialty clinic, जहाँ पे मैं state of the art services provide करती हूँ for your skin. And I'm also a mother of a 2-year-old, and I have an amazing husband who is an orthopedic surgeon who is also the co-founder of Mahe Clinic. His name is Dr. Ashish Singer. I have a cute little 2-year-old daughter who is very, very hyperactive all the time. And today I am going to talk about myself. I obviously completed my schooling and everything, and then I did my MBBS and my MD. And I did my MBBS from Manipal, Nepal, which is in Pokhara. And then I completed my MCI exam, which is a FMGE exam. Most time pe hota tha, I don't know whether it's still here or not. And then I did my internship in R&T, and then I did my MD from Gitanjali Medical College and Hospital. I worked at Fortis for approximately 3 to 4 years, and then I started my own practice in 2020, actually, COVID times mein. What inspired me to get in this field is it's actually I've always been very passionate about skincare. My mother, she is very passionate about skincare, and growing up मेरी mother को भी काफ़ी skin issues रहे हैं, मतलब adult acne उन्हें काफ़ी रहे हैं। मुझे भी कॉलेज टाइम पे बहुत सिवियर एक्ने रहा करते थे, जिसको हम नॉडुलर सिस्टिक एक्ने भी बोलते हैं। एंड फर्स्ट हैंड आई नो मैं कितना टैक्सिंग होता है ये माइंड पे, कितना खराब होता है आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। फर्स्ट हैंड मैंने मेरी मदर में देखा है और फिर मैंने अपने आप में भी एक्सपीरियंस किया। एंड देन जब मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी मेरे कॉलेज में, जब मैं MBBS कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और सब किया। बट मैंने वो मेडिसिन ली भी, बट मुझे एक कुछ डिफरेंट चाहिए था, यू नो। आई वांटेड अ फ्यू ट्रीटमेंट्स दैट वुड हेल्प मी, सम लेजर ट्रीटमेंट्स और एनीथिंग। एंड आई आल्सो वांटेड कि मुझे थोड़ा you know, I wanted someone who would just communicate to me, just talk to me a little bit, you know, not like da 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 जाओ। तो जैसे कि अगर मुझे कुछ बात करनी है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब मुझे कोई मतलब एक्सप्लेन करता है। ऑब्वियसली वो बहुत बिजी थे, ही हैड लाइक 100 patients waiting for him outside, but I wanted something like that, and that inspired me a lot to get into this field, you know. It's like, you know,
I have an instinct for this. I have an instinct for skincare. So I'll do really well in this. So that really inspired me to get into this field. I have faced a few challenges. Now, career is never a high. The career path is always like this. It's very up and down, up and down, up and down. I have been told multiple times by a lot of people, not just कि जो मैं कर रही हूँ, that's not good enough, or I am not good enough, or I'm too ambitious, I'm too much of this, I'm too much of that, और ये इससे नहीं होगा, ये कैसे करेगी, ये करने का क्या पॉइंट है, ये क्यों कर रहे हो, ये मैंने जितना अभी तक मेरे शॉर्ट स्पैन ऑफ करियर में एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बहुत रेयरली आपको ऐसे कोई लोग मिलेंगे जो आपको एनकरेज करेंगे. कई बार, और आपका खुद का अंदर से यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू एनकरेज योर सेल्फ डेली. और एनकरेजमेंट और कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होती है. यू हैव टू एक्सरसाइज इट डेली, यू हैव टू टेल योरसेल्फ डेली दैट यस यू कैन डू इट, यस यू आर इनफ. और जो आप रिस्क ले रहे हैं वो मशीन के ऊपर रिस्क नहीं है, वो क्लिनिक के ऊपर रिस्क नहीं है, वो आप अपने में विश्वास करते हैं, इसलिए आप वो रिस्क ले रहे हैं. तो दैट इज समथिंग जो मैं अपने आप को कहती रहती हूँ बार बार कि अगर मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकती, अगर मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखती, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कोई और मेरे में कॉन्फिडेंस रखेगा अपना. एंड मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है. आई हैव एन अमेजिंग हस्बैंड, आई हैव माय अमेजिंग पेरेंट्स. My mom and dad have always been there. They have supported me in everything. They have been there for my highs, they have been there for my lows, and of course my support system also includes me. I have been very strong for a lot of my lows, and I've also been very level-headed for a lot of my highs. So yeah, that's that. Thank you. So what I do, what I absolutely love about my work is working with art machines. मुझे लेजर मशीन्स के साथ काम करना बहुत पसंद है. दैट इज वन ऑफ माय पैशंस. क्योंकि ये मशीन्स का काम इतना अच्छा है कि आपके सामने पेशेंट लेटा हुआ है, प्रोसीजर कर रहे हैं, लेटे लेटे आपको वही इफेक्ट दिख जाता है. देयर one area that will be very light on the skin, one area that would be very dark on the skin. I love seeing that. I love seeing the happiness on my patient's face, when they are being told कि ये नहीं जाएगा, ये pigmentation बहुत लंबे time तक रहेगा, yada yada. But then they come and then I see that happiness and that glow on their face. That makes me really happy. So that is effects that can be absolutely seen, right there in front of your eyes. That is what I love about my profession, definitely. And of course, I am very passionate about skincare. So my profession basically enables that passion of mine कि मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में और जान सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ, क्या क्या टाइप के होते हैं, क्या अच्छे होते हैं, क्या बुरे होते हैं, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकती हूँ. सो दैट मेक्स मी रियली हैप्पी. माय रोल मॉडल इज माय फादर. My father is a businessman, and he has started from right here and he has come here. So I love seeing him work. और वो जो रिस्क लेते हैं, जो रिस्क पे रिस्क अगर फेल भी हो जाती है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं. वो फेलियर से डरते नहीं है, वो हमेशा ही ही इज वेरी स्टबर्न. ही गोज थ्रू, जो चीज दिमाग में लगी वो करना ही है. सो ही इज माय रोल मॉडल. एंड व्हेनेवर, जब भी मैं कोई रिस्क लेने वाली होती हूँ, आई जस्ट थिंक व्हाट वुड माय फादर डू. सो आई डू दैट. एंड जब भी कोई मेरा रिस्क या मेरा फेल होता है कुछ भी, तो I think of him and I go through with it. मुझे लगता है कि ठीक है, ups and downs आते हैं, failures भी आते हैं. So yeah, I mean, he inspires me that way. The quote that really helps me out is not to run after success,
if you do what you love, if you're passionate about what you do, and if you absolutely believe in it, then the success will come to you. You don't have to run after it. So yes, that really inspires me. Well, experience. I would definitely go with experience. But yeah, education enables you to have that experience. So it should be both. They both go hand in hand. But at the end of the day, आप कितना भी पढ़ लो, but experiences आपको ज़्यादा सिखाते हैं. आपके जैसे टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा होगा कि सपोज इतना एनर्जी यूज करना है या इन्फ्लुएंस पे काम करना है वगैरह वगैरह, बट रियल लाइफ में जब पेशेंट सामने होता है आपके, तो आपको आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है, कैसे यूज करना है मशीन को, क्या एनर्जी रखनी है वगैरह. जस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस देन, बिकॉज it's not there are every skin type is different, and जो लिखा रहता है वो हमेशा work नहीं करता. So it's very important to have experience. So yeah, for me experience outweighs education in some way, but if I did not have the education, then I would not have the experience. So yeah, but experience. So one of the most challenging things that I have faced in my career till now, जब से मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की है, ये मशीन्स लेकर के आना, जो लेजर मशीन्स मैं लेकर के आई हूँ फर्स्ट टाइम उदयपुर में, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए, बिकॉज इट रिक्वायर्ड टन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये मशीन्स दे आर नॉट चीप, दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम USA and they are extremely expensive. So yeah, that was a huge risk that I took. So that's been the most challenging part, definitely. बट या अगर आप क्वालिटी के साथ एक बार काम करते हो तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, फिर वो टेस्ट लग जाता है, you're like okay, better, let's get better. So yeah, that has till now been one of the most challenging parts, definitely. To all the youngsters out there, well, first of all, be trust in yourself. It's very important. First of all, any field you choose, you have to believe in yourself, you have to be confident, and it's not easy, definitely. And if you do want to become a dermatologist, it's an amazing field. Do go for it. What you really have to do is you have to just be passionate about skincare. If you really, and dermatology is not just about ye cream laga li, wo cream laga li. No, that is a misconception out there. Dermatology is far more intrinsic because we treat thousands and thousands of skin conditions. It's not like ye cream laga lo aur ye theek ho jayega. Dermatology is not about that. Dermatology is very intrinsic. Dermatology is very complicated. And it's about thousands and thousands of diseases which are right there visible on the skin, and you have to treat them, you have to differentiate between them, you have to diagnose them correctly. So yeah, do not lose hope, be confident, and just be stubborn. Please be stubborn. Just focus whatever you want, and just go for it, run for it. My success mantra is to give my 100%, and I encourage everybody who works with me to give their 100% and give good quality service. Just get the best out there and give your best out there to the patient. That is my success mantra. And of course, also clinic is not just about what I as a doctor think. It's a joint effort. So I'm very lucky to have people who are amazing to work with, and they also give their 100% daily. So if it wasn't for them, I wouldn't be able to work as hard as I'm working right now. And my success mantra also build facilities to function, and they are not just there as my employees are working for me, they are my family. So yeah, that should be anybody's success mantra, frankly, because you have to create a very happy working environment. It shouldn't just be about work all the time, So yeah,
that is my success mantra. Make your workplace a happy place so that you are excited to work and people who work with you are also excited to work. I would like to think, yeah, experience has taught me how to be a leader and it's still teaching me. Being a leader is about willing to learn from your mistakes. It's accepting your mistakes, becoming better, evolving. And once you refuse to evolve, if you're stubborn, if you're like, no, my way is the correct way and I don't want to hear anything else about it, then that's not a leader, that's a dictator. So yeah, experience is still teaching me how to become a better version of myself, and every single day I try to become a better version of myself. So yeah, that's that. Nobody's born a leader. You have to, take up the mantle and just go for it. Go with it. Go for your dream. Well, there are actually two achievements, and they go hand in hand. When I became a mom, when I had my daughter, so that feels like, wow, okay, that is one of the best things, that I created a human being. That feels amazing. And creating her, bringing her into this world, that motivated me to start my own private practice. And I'm proud of it both. I literally started out with a table and a chair outside my house. That's how I started as soon as she was born, So, and then I progressed from there to now my clinic, which is going to open in another few weeks or so. So yeah, I'm very proud of both these achievements, and it is my becoming a mother. It is having my daughter, who has, she has been the best achievement ever, and she has motivated me. Her presence alone in my life has motivated me to give it my all, give it my best, and to take all the risks and just go with it, run after my dreams. So I was born in Calcutta, and I grew up there for a couple of years, then Jamshedpur, and then we came to Udaipur. We have been in Udaipur for 20 plus years now. So yeah, Udaipur is home now. एंड मेरी जो सबसे अच्छी मेमोरी है चाइल्डहुड की, वो है फतेह सागर की. जब मेरे पापा के पास एक स्कूटर रहा करता था, बजाज का उस टाइम पे आया करता था, गियर वाला स्कूटर होता था. एंड और हम क्या था, वीकेंड्स पे फतेह सागर जाते थे. सब फैमिली शॉपिंग है फतेह सागर, हम वैसे ही जाते थे वीकेंड्स पे. और हम तीनों स्कूटर पे रहते थे, मम्मी पीछे, पापा ऑब्वियसली स्कूटर चलाते हुए, और मैं आगे बैठती थी. तो एक फतेह सागर क्रॉस करके पाल वगैरह, जहाँ वो शिव जी का मंदिर आता है, वहाँ उस तरफ जहाँ चारों तरफ पेड़ है, हरियाली है, वो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेच ऑफ रोड आता है जिसमें एक स्लोप आता है. तो और क्या कि तो उस स्लोप पे मेरे पापा उस टाइम पे स्कूटर को बंद कर देते थे. तो गियर वाले स्कूटर्स बहुत ज्यादा आवाज करते हैं यूजुअली, बट जैसे ही वो स्लोप पे बंद करते थे, एकदम सब शांत हो जाता था. और ऑब्वियसली स्लोप यूं रहता था, तो द स्कूटर यूज्ड टू गो डाउन, ग्लाइड डाउन लाइक दिस, एंड इट वाज अमेजिंग. इट यूज्ड टू, उस टाइम पे वो ठंडी हवा मुंह पे लगती थी, एंड इट यूज्ड टू फील लाइक आई एम फ्लाइंग, and it was I still remember it very vividly. It was one of the best experiences ever of my childhood. So yeah, that's that. If I could get into a time machine and go back, I would go back to my younger self, and I would just hug her, give her a tight hug, and tell her it's going to be okay. Sab theek ho jayega. Everything is going to be fine. Do not listen to the haters. Do not listen to people who are saying you are not good enough, that you cannot do anything. Please don't listen to them. You are more than enough, and you're going to be so happy when you grow up. You're going to be doing so well, and you're going to be doing what you love, and there is nothing better that in this world. So I wouldn't change a thing except to just, hold my younger self and tell her, it's going to be okay. It's going to be just fine. The pandemic, this is just such a spectrum of human emotions and experiences, frankly.
The pandemic has, मेरे लिए it was a very life-changing experience. I was pregnant during the pandemic, and it was a very challenging moment for me because मेरे husband hospital में work कर रहे थे और मुझे उनसे दूर रहना पड़ता था because obviously वो hospital से work करके आ रहे तो मैं infect नहीं हो जाऊँ तो that was being pregnant and being alone. That was challenging for me. And then ये सुनते रहना कि ये जो मेरे known है ये बीमार पड़ गया कोई, and so many people I knew they passed away. It wasn't all about dalgona coffee or banana bread for them. There were people, there were families who got destroyed. There were people who lost the ones they loved, and it was very, very challenging. So the pandemic has taught कि कुछ भी permanent नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा, you should not take anything for granted. You should hold the people you love very close and cherish them, and you should value these moments, value these moments where, you can just go out and have a golgappa or, go out and just enjoy with your friends. These moments are tiny, tiny pockets of happiness, these are so important. So we should just hold on to them. Pandemic से पहले I used to take them for granted a lot. Just like हो गया ठीक है, यहाँ जाना नहीं, वहाँ जाना नहीं. फिर pandemic में घर के अंदर ही बंद रहे तो अब ऐसा लगता है कहीं बाहर जाए, कहीं बाहर जाए. That feels so good, and just seeing everybody I love around me safe and sound, that also feels amazing. That is a blessing. So I think we should all cherish that and keep it close to our heart. And this small song is for my husband. मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल की जान मेरी, जान मेरी. Thank you. So, dermatologist वो डॉक्टर्स होते हैं जो स्किन, हेयर, नेल डिजीजेस ट्रीट करते हैं. हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और लेप्रेसी में भी स्पेशलाइज करते हैं. ये 2 एडिशनल हमारी स्पेशलिटीज होती हैं एमडी में. अगर आपको कोई स्किन डिजीज है जिससे आपको बहुत इश्यूज होते हैं, अगर आपके पास हेयर फॉल है, कोई स्कैल्प डिजीज है, कोई हेयर डिजीज है, या अगर आपको नेल्स में कोई डिजीज है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई जेनाइटल एरियाज में कोई इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली डू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. वी ट्रीट दैट. वी ट्रीट thousands and thousands of skin diseases. And डर्मेटोलॉजी का एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है कॉस्मेटोलॉजी. कॉस्मेटोलॉजी इन एंड ऑफ इटसेल्फ डर्मेट का पार्ट नहीं होता है. वो अलग से अगर आप फेलोशिप करते हैं या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं तो उसमें हम सीखते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट ही लेजर्स में और बाकी इक्विपमेंट्स में स्पेशलाइज करते हैं. हम एटलीस्ट 3 से 4 साल बस यही पढ़ते हैं जब हम अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं. हम स्किन डिजीजेस के बारे में और हमारे कोर्स बुक्स में जो रहता है स्किन, हेयर एंड नेल डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं. And we specialize in all kinds of lasers. That is what we do. That is a part and parcel of our job. And we specialize in it for consecutively 3 years. We specialize in peels, we specialize in lasers. ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने 2-3 महीने का कोर्स किया और बस हो गया. हम 3 साल तक कंसिस्टेंटली हम peels, हम lasers, ये जितनी भी चीजें हैं, they are very delicate, they are very intricate, and we specialize in it thoroughly. And then we are given the degree of MD. We answer questions about it. There is a viva about it. There's a whole lot of things, then we get that degree. So yeah, that is what a dermatologist is. अगर आपको मुझे किसी अगर आपको कोई स्किन डिजीज है, डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें. अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यूजुअली माहे क्लिनिक, दैट इज माय प्राइवेट क्लिनिक, मैं उस पे पेशेंट्स को देखती हूँ, अटेंड करती हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग. एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन 9799733992, which is the contact number for my clinic, and you are always welcome to take an appointment and to ask
us about lasers and what are the facilities we are providing. You can also check out my Instagram page by the name of Dr. Swati Tripathi. उसमें मैं और जो भी स्किन डिजीजेस हैं, जो भी आपकी डेली स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड मैं और डिस्कशन करती हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ विच आर वेरी इंफॉर्मेटिव। और जो मैं एक्चुअली मैं काम करती हूँ, जो मैं लेजर्स का करती हूँ, उसके बिफोर आफ्टर्स और लेजर कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालती रहती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो प्लीज अगर आपके पास टाइम हो तो डू चेक इट आउट। Thank you for your time today, and thank you so much for listening to me. It means a lot. Thank you. मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर, डू थोड़ा सेल्फ केयर करिए। इट डज नॉट मैटर कि आप लड़का है या लड़की है, स्किन और हेयर सबका होता है। तो स्किन केयर इज नॉट फेमिनिन, इट्स नॉट जस्ट एक्सक्लूसिव कि ये सब लड़कियां ही करती हैं। I would also encourage the boys out there listening to this कि there is no shame in taking care of your skin. There is no shame in having a separate towel for your body and for your face. It's not a luxury. You can just go ahead and do it. There's nothing feminine about it. वो एक गलत notion डाल के रखा है सबके दिमाग में। And another thing that I would like to say that fair is not always beautiful. Don't please concentrate on fairness or run after fairness. Be confident in the skin that you are in, and just concentrate on having a healthier skin, not a lighter skin. Just always focus on having a healthier skin. Fairer is not always better, so don't listen to people who tell you otherwise. Thank you. Take care. Thank you so much for listening to me. It means a lot that you took out 1 hour of your day and heard me babbling. आपने मुझे 1 घंटा पूरा बड़बड़ करते हुए सुना। Please do share whatever I have said. Share it as much as possible. It would mean a lot. Because dermatology के बारे में जो सबके जो जनरल पीपल के दिमाग में है, वो थोड़ा सा क्लियर होगा। And people will realize how important it is to be confident and happy in your own skin. So it would mean a lot if you would share this. Thank you again for listening to me. Take care. Bye-bye. दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी की जिंदगी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर करें। वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने अनुभवों को साझा करने का और अपनी जिंदगी की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। जी हाँ दोस्तों, आपकी कहानी में ताकत है लोगों का जीवन बदलने की। तो आइए और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। ले आइए सभी के जीवन में आशा की एक नई किरण, कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर होंगे हाजिर एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा ये खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।